Hello everyone, welcome back to another webinar by Indiabulls Securities. जैसा कि मैं देख सकती हूँ काफ़ी लोग हमको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं. प्लीज ड्रॉप अ हाई मैसेज इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो कि हम क्लियरली ऑडिबल है. हेलो एवरीवन, प्लीज ड्रॉप अ हाई मैसेज इन द कमेंट सेक्शन. हेलो हाय जिकी. हेलो एवरीवन. हमारे रेगुलर ऑडियंसेस को पता होगा कि हम ये जो वेबिनार है वो डेली ट्यूसडे को लेके आते हैं ऑन एक्सपायरी, जिसपे हम बात करते हैं कि एक्सपायरी पे निफ्टी का मूव कैसा हो सकता है. So yeah, hello everyone. We'll wait for a few more seconds and then we can begin with the webinar. Hi everyone. Please drop a hi message in the comment section. Yes, so I guess we can start with the session. So once again, hello everyone. I am Akanksha Kumawat and I welcome you all to this another webinar by Indiabulls Securities on expiry, जो कि हम हर ट्यूसडे को लेके आते हैं. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, इसीलिए आज हम आपके लिए सेशन लाए हैं जिसपे हम देखेंगे कि एक्सपायरी के दिन मार्केट का कैसा बिहेवियर हो सकता है और आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो इस वेबिनार में हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर राजेश श्रीवास्तव, who has more than 2 decades of experience in the markets, and joining with him is Abhishek Jain, who is a product manager at Indiabulls Securities. So, hi Rajesh sir, hi Abhishek. Hi Abhishek. Hi. I guess for Hi, some Akash. reason Rajesh sir is not visible to us. Yes. Meanwhile, yes, he has joined again. Yes, hi Rajesh sir. A very good evening to Hi. both of you. Hi sir, I am audible, I believe, right? Yes, you are. यस. तो सर जैसे कि हम ये वेबिनार हर ट्यूसडे को लेके आते हैं, तो हमारे ऑडियंस को सबसे पहले ये बताइए कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप क्या व्यू रख रहे हैं अपना मार्केट पे? पहली बात, दिस इज द मंथली एक्सपायरी. ठीक है, मंथली एक्सपायरी ऑन अ लो IV environment. Okay, I think we have made the historical low this week. This expiry. Okay, so we have to be careful that monthly expiry behave very differently from weekly expiry. Okay, and it's more important when the IVs are low. Okay, see two things. Low IV means low premium, does not mean low movement. है ना? Monthly expiries are different because future expiry हो रहा है. This is the December expiry, so long term hedge will be closed. Institutional rollover will happen, and again this is a December expiry, quarterly expiry, half yearly expiry. So we have portfolio rebalancing. So everything has to happen in last 90 minutes, right? टिपिकली हम क्या बोलते हैं कि वीकली एक्सपायरी जो है वो शॉर्ट गामा का गेम है, चलो मैनेज कर लेंगे. बट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैरी सेटलमेंट करना है, पोजीशन अनवाइंडिंग करना है. ओके, तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट ऑप्शन ट्रेड, इट्स एंटायर मंथ पोजीशनिंग कमिंग टू एन एंड और कमिंग टू अ सेटलमेंट स्टेज. ओके, so again, low expiry, so does not mean कि हम ATM strangles naked sell करें या aggressively sell करें. There are tail risks always. I mean, as a someone who's coming on platform like Indiabulls, we cannot say कि बस low IV है जाओ और ATM बेच दो. It has to be very structured, and याद रखना हमेशा कि there is always a tail risk option selling में, and monthly भी है. ठीक है, actually बोलो तो it is a worse for overconfident sellers. I mean, yeah, it is worse for impatient buyer as well. If I'm an option buyer and if I'm impatient, it is not something for me. But it is more riskier for overconfident sellers. Okay, okay. Let me tell this way. IV is implied volatility. It just tells you what market expects. It does not tells you what market will do. So we have to prepare for more for the realistic scenario than implied scenarios. ठीक है, तो क्या करते हैं? पहले तो देखते हैं कि अभिषेक आप let's start with you. Okay, how do you showcase IV to your users?
like if I'm your user, if I'm running my algo on your Mm-hmm. platform, how do I know what is the IV? How do I know uh, when was the position entered? What was the IV? If I made money, great. Of course, the DK would have come. Then how do I know कि जब हमने एंट्री लिया तो क्या प्रीमियम्स थे, क्या डेल्टा थे? Do you focus this to your client? Yes, sir. Okay, so go ahead So, and share on your screen. डेफिनेटली सर, उसके साथ साथ एक मेरा क्वेश्चन भी है. बोलो ना. कंसिडरिंग हॉलीडे वीक है, फॉरेन सारे बड़े FIIs जो भी रहते हैं, बड़े DIIs जो भी रहते हैं, सब छुट्टी पे चले जाते हैं, राइट. अपनी जितनी भी बड़ी प्रॉप डेस्क होती है, जितनी भी डेस्क होती है, सब अपना बंद करके चले जाते हैं छुट्टी मनाने. क्या उतनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट में, या फिर बिकॉज प्रीवियसली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड मार्केट में वॉल्यूम्स इतना नहीं रहता है एट दिस ड्यूरिंग दिसंबर एंड्स. क्या देखो, हमें दो इस चीज है. साल हमने कुछ हमने नया हमने दो एक्सपेक्ट करना चीज चाहिए? दो चीज है. यस, most of the foreign funds are on holiday, but remember they don't manually sit and trade. There are algorithms made for them, right? So they trade for them. This is a December expiry, so long-term hedges must be coming to close. Okay, monthly expiry, quarterly expiry, half-yearly expiry. So a lot of portfolio rebalancing, may be triggering tomorrow. तो ठीक है, वॉल्यूम वाइज नहीं हो, बट वोलेटिलिटी वाइज तो कुछ कमी नहीं होने वाला. ठीक है. तो यस, आई हियर यू व्हाट यू कम से. वॉल्यूम्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करना चाहिए. वो और रिस्की है, कम वॉल्यूम में ज्यादा. आई मीन, सी, so I don't know if we have discussed this in any of the YouTube, but what we have seen, there are 13 expiry in a year, which is huge volatile. Like people give a shot to hero zero, right? So I must be discussed in that कि भाई जब हीरो जीरो करते हैं तो हर एक्सपायरी काम नहीं करता. देयर आर 52 निफ्टी एक्सपायरी, 52 सेंसेक्स एक्सपायरी, राइट. हीरो जीरो कितनी बार काम करता है? जब आप पीछे देखो तो 12 से 13 बार. ठीक है. और वो 13 बार में क्या कॉमन है? 8 टाइम्स इट्स द मंथली एक्सपायरी. सो वी नो वन थिंग, मंथली एक्सपायरीज आर by design volatile. It could be a low volume, but it will be volatile. It can be volatile. Okay. दूसरी बात है कि यस, ये हम एक there are many misconceptions we have built in our brain when it comes to market, right? One of this is कि FIIs छुट्टी पे रहते हैं तो volatility नहीं रहती है. Like it is very similar to over the time retail और DIIs ने भी काफी they all are. And see, lower IV does not mean कि only lower premium. Okay, it can have volatility. यहाँ तो दोनों बातें होती है. अगर वो नहीं है तो फिर भी उनके एल्गो काम कर रहे हैं, और वो नहीं भी तो आईवी तो काम करेगा ना अपना. ओके. अच्छा, सिंस बता रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा सर. हमारे यूजर्स के लिए आप बता सकते हैं आईवी एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट इज आईवी एग्जैक्टली, और क्या पिक्चर प्ले करता है वो? Let me start them with the VIX. But before that, can you go back and share? We were talking about how can Indiabulls is user. So can you go back, share by the RAM? I'll come back on your question. So we'll start with the VIX, then we'll come to IB. Okay? So go ahead and I'm keeping eye on the question also. Sorry to interrupt in between. Meanwhile, Abhishek is presenting. मैं ऑडियंस को बता दूं कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज उन्हें चैट बॉक्स में डाल दीजिए. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आपके सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे. Yes, Abhishek, you can present. Yes. Alright. अभी वो दिखा दो, फिर मैं आपका एक क्वेश्चन मेरे स्टैंड बाय है कि what is IB in a very simple or what we say people who come to see us on the YouTube उनके. Yes, Abhishek, yours. Go ahead. So here at Indiabulls Securities हम IV users अगर IV देखना चाहें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, they can view IVs at two different places. One is the option chain, जहाँ पे यूजर्स अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स का IV चेक कर सकते हैं. टू चेक दैट IV, यूजर्स ऑप्शन चेन में जाके ग्रीक्स मोड पे जा सकते हैं, and here they'll be able to see IV, delta, theta, vega, gamma, right? And along with that, users
आईवी की पोजीशनिंग चेंज भी कर सकते हैं. दिस इज कंप्लीटली कस्टमाइजेबल ऑप्शन चेन. तो users can view the IV for all the option contracts listed for any of the script. Now next, here in our algo platform, let me just share my other screen, just 1 second. Yeah, here at our in our algo platform, there are strategies जहाँ पे IV is you know IV is taken as a parameter in calculating entry triggers, right? In getting the entry triggers, we can fetch the IV in real time to see which option contract to enter into. तो if any user wants to see कि जो मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री हुई, जिसमें ऑर्डर प्लेस हुआ, उसका आईवी वो पर्टिकुलर टाइम पे कितना था और अभी कितना है, राइट? यूजर्स कैन क्विकली नेविगेट टू द डिप्लॉयड स्ट्रेटेजीज एंड लेट्स से एनएफ डेल्टा न्यूट्रल मेरी जो स्ट्रेटेजी रनिंग है उसमें मैं जाता हूँ. हियर आई सी दी लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रेड्स. हियर आई कैन सी दैट मेरा बेस आईवी कितना था, अभी आईवी कितना है, राइट? राजेश सर, इज दिस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? Yeah, so if I'm your QuantLab user or you know Indiabulls Securities algo user, I just wanted to know how do we see when I made an entry, what was the IV, उसके बाद ऊपर गया नीचे आया या फिर वो अगर पैसे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, क्या कौन सा component has jeopardized my game. So yeah, you have it here. Yes. है ना? Yeah. So Abhishek, at the start Yes, of this conversation, okay, I'm reading questions also, but then let me finish this IV वाला क्या है, right? देखो, so let me make it more user friendly terms rather than using a lot of jargons. So it is a forward looking, volatility कितना हो सकता है, and remember it derived from the option price. ठीक है? लो IV does not say कि अप है या डाउन है, बेरिश है या बुलिश है. लोग बोलते हैं यार लो विक्स है तो वोलाटिलिटी कम होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट जस्ट टेल द साइज ऑफ एक्सपेक्टेड मूवमेंट. इट डज नॉट टेल्स यू कि अप और डाउन, पहली बात. ठीक है? दूसरा है, अगर मुझे बहुत मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज बोलना हो तो आईवी टेल्स यू इम्प्लाइड, ओके, कि हाउ बिग द मूवमेंट कुड बी. अगर ऊपर जा रहा तो हाउ बिग, अगर नीचे आ रहा तो हाउ बिग इज द मूवमेंट. ओके, सो मुझे जानना है कि at the VIX of 10 what is the expected movement. So थोड़ा समझना होगा VIX क्या है. उसके बाद you can derive the exact, it's not exact always, the indicative implied kind of कि कितना पॉइंट मूव कर सकता है. तो VIX divided by the square root of time. So for a daily basis you do 2 days, that is number of trading days we have. ठीक है? So overall, IV is not calculated from the option price. The option price is calculated from the IV. ठीक है? So IV tells you the expected movement for the instrument for the day, and say in other words, option prices is function of a spot future prices, time to expiry, strike like ATM, OTM, and the biggest driver is the IV for the option prices. ठीक है? If it's low IV, we expect a very controlled movement. There's no event risk currently market is pricing in. Okay. Got it. Cheaper option does not mean profitable options. Cheaper option always at risk. The biggest is a saving ATM. ठीक है? क्या? सर, तो अगर मुझे एक लाइन ट्रेडर्स की भाषा में बोलना हो तो मार्केट का कलेक्टिव गेस ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी इज द आईवी. ओके. सर, कोई ऐसे सिनेरियोस भी आते हैं क्या जहाँ पे मैं ऑप्शन चेन में ऐसा देख पाऊँ कि एटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस या फिर एटीएम ऑप्शंस जो हैं या फिर नियर एटीएम ऑप्शंस जो हैं उनका आईवी एकदम ही लो चल रहा है या फिर कुछ एवरेज सा चल रहा है, लेट्स से 7-10, बट फार आउट ऑफ द मनी, कोई एकदम ही फार आउट ऑफ द मनी वालों का आईवी एकदम ही फटा पड़ा है, एकदम ही बहुत ही ज्यादा हाई चल रहा है.
So that's क्या called ऐसे पैटर्न्स कुछ इंडिकेट करते हैं? yeah, that's called forward volatility. Okay. ओके. So let me tell you, अगर अगर I mean it tells you the how एंड ऑल्सो सर nervous. प्लीज सर ऑल्सो ये भी बताइए कि क्या ये पैटर्न्स कुछ इंडिकेट करते हैं? क्या इस पे कोई स्ट्रेटेजीज बन सकती है जिसपे हम Oh लोग yeah, there are many strategies on the Yes. forward volatility. One is the calendar spread. Okay, I mean if you go and do a basic Google search, which is the best strategy on the forward volatility. So forward volatility means your IVs at the ATMs are very low and then far IVs are very high. The first thing you will see if you do a basic Google search strategy for forward volatility, you will see calendar spreads and all. And there are lot of US Dow Jones trader have YouTube videos about forward volatility. ठीक है. हमारे यहाँ थोड़ा सा कैलेंडर स्प्रेड्स में मार्जिन के लिए अभी तो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, बट पहले तो बहुत ही था. देखो so IV basically tells you कि how I believe there is some issue with Rajesh's IV. activity. Okay. Am I still online? Yes, Yeah, sir, you are audible now. So if you go back and see, I think I'll just talk to some of your team member to get this also on your platform. IV versus realized volatility. Okay, so if you have a lower realized volatility against whatever IV was showing, you make money in option selling, but you lose money in option buying. But say if you have lower IV and a higher realized volatility, you make money in buying options than selling options. So rather, let's see this way. So what is realized जो हो चुका है, right? तो historical volatility बोलते हैं उसको. The historical volatility is always on the priced moves. So or IV is based on the future expectations. ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि IV बहुत लो है, but actually इतना लो market react नहीं कर रहा, market is reacting much more than what is implied currently or the future expectation, then your option selling strategy will haunt you. होता भी है. So you go back, there are proven theories or proven I mean basic है कि अगर आपका realized volatility is more than implied volatility, you don't make money in the options selling. You make money only in the option buying. ठीक है. Interesting. Yeah. तो एक चीज और रखना है कि आपको थोड़ा देखना है कि चलो आज हम 9, 9:30, 10 की आई थिंक 6-7 की आईबी पे हैं, बट एक्चुअली वो प्रोबेबिलिटी है क्या कि उससे ज्यादा रिएक्ट कर रहा मार्केट, देन यू कैन डिसाइड व्हिच स्ट्रेटजी टू पिक अप. सो Abhishek, I mean, when you were showing that, I saw 2 scalpers. So can you share us what happened in those? I didn't get you, sir. Can you repeat again? When you're showing the strategy, you're showing some scalper. So just share what was the IV when it Just entered. share again. Yeah. Are you talking about this? Yeah. Okay. No, your screen is not visible. The question, have you used IV? I will go yes. Yeah, I'll answer this. So let's go into this and see what was the IV when the trade entered. This is the scalper? Correct. That's right. Okay. So what was the here IV? It was at 9.57. No. When you entered, what was the IV? It was 9.5. And when you exited, IV हमारी बढ़ गई है 9.91. हाँ. है ना? So you made money here. हाँ, इसमें तो फायदा हुआ होगा IV पॉइंट ऑफ व्यू से. But what about the DK? DK आया होगा ना सर? देख लो ना उसमें. I mean DK का प्राइस में दिख ही रहा है, DK नहीं आया तो your synthetic value नहीं आया. हाँ. ठीक है. So now see one selling strategy. What happened enter and exit IV, and if you have made money or not. For a selling strategy. This is like buying strategy, right? So here the IV has gone up. I mean basically realized is more than the So you have made money. लॉस चल रहा होगा ना शॉर्ट. हाँ, सेलिंग स्ट्रेटजीज में लॉस चल रहा होगा. लेट्स सी. शॉर्ट स्ट्रैडल्स. हाँ देखो. My favorite strategies. They might be showing losses. Everyone's favorite. लॉस दिखा रहा है ना, देखिए.
हाँ, तो एक बार एक ओपन करो, देखते हैं आईवी एंट्री के बाद क्या हुआ है। सीधा कोई शूट एक ओपन करो। 11.52 से सीधा So what happened when 14.39. हाँ, तो look at that, okay. Look at the So loss. yeah, so that's how it works. Like, you know, if the realized is more than implied, you don't make money, okay, in selling. So you make option buying. So I think yeah, there's a question: have you ever used IB algo? Yes, I have used. I use it for both live trade, and IB algo offers forward testing. So before I actually go and Correct. fully sure that this is exactly working how I want it to be, I keep some strategies on the forward test. Okay. So yes, I'm pretty happy with this all features. I don't see I get to see this in any of the privately operated algo platforms कि जब मैंने एंट्री किया तो क्या आई था, जब एंट्री किया तो क्या डेल्टा था, या सिंथेटिक वैल्यू क्या थे. तो I mean there are many unique things I get to use here, and then I'm happy for that. So there's a question about this. Okay. Uh, सेलिंग okay. वाली सारी स्ट्रेटजीज में लॉसेस है. हाँ, तो वो आपका रियलाइज इज मोर देन इम्प्लाइड. यार देखो, ये इम्प्लाइड तो लाइफ टाइम लो है, राइट? आई डोंट थिंक इस पे इतने लो इम्प्लाइड पे रियलाइज कुछ हो रहा होगा. ओके. तो ओके. so basically IB tells you what the market fear. I mean, there is no fear currently. किसी भी चीजों का नहीं है. So yeah. Sir, also I just wanted to know कोई ऐसे global factors अभी which can concern Yeah, concerns तो नहीं बोलेंगे, but something none we of are seeing silver prices shooting up day by day. क्या उसका कोई impact हमको expiry day पे दिख सकता है? I don't know, just randomly. Is there a correlation? It can trigger some mark to market things and all, but that's a different picture altogether. Let's not club it. But it has a lot of industrial use. Okay, the silver, and possibly you'll see some impact on the raw material cost going up on the equities and all. But then that's it does not something which happened overnight. It is happening for last 1 year, the silver prices. So market has not yet reacted. Let's see how it reacts. But for now, there's no uncertainty. Perhaps there are some good feel about a war coming to end. There are discussions. So if the war coming to end, then a lot of things can go good. Okay. So there's no uncertainty. Rather, there are good things. Let's hope for the best, sir. Yeah. Abhishek, एक चीज और है. Simple strategy for beginner to trade on expiry. उदेश प्रभाकर जी, देखो, हमने जब शुरू की थी ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग से चालू की थी, ऑप्शन बाइंग दोनों थी. तो ऑप्शन बाइंग, so we have just seen, Abhishek has shown us कि scalper working good, and yes, it makes sense to have a scalping approach on the expiry day. But then there are rolling straddles. Okay, Abhishek, I think I've seen one Phoenix नाम से आपके हैं. There are rolling straddles, and then there are quite a few Yes, Jodi arbitrage and all. So why don't you share the Jodi arbitrage? So गायकराज जी, देखो, शुरू सभी लोग रोलिंग स्ट्रैडल से करते हैं. सर, जोड़ी आर्बिट्राज I remember even आपकी भी one of the favorite strategy है. That's my favorite because it does the synthetic versus future versus spot के एटीएम पे थोड़ा आर्बिट्राज टाइप का काम करता है. तो गायकवाड़ जी, मैं उसको डिटेल फिर जाता हूँ एक बार कि हम सभी लोगों ने प्लेन वनीला स्ट्रैडल चालू किया था, रोलिंग करते थे, 50 पॉइंट ऊपर जाती है, क्लोज करके वो कर दो. पर इनका जो जोड़ी आर्बिट्राज है वो थोड़ा सा यूनिक है. इनका फिनिक्स भी थोड़ा यूनिक है. It's subtle. It's move between the synthetic ATM to spot ATM to future ATM. There are difference in 3 different ATM. Okay, so I think अगर आप beginner हो, you want to start, I think that is a strategy. I mean, I don't recommend anything, but you can just learn more about strategy parameters or strategy structure from this. Abhishek, I think I request you to get in touch with Udesh ji and then go explain कर दो आप. I don't know how you get the contact number, but help him understand this Jodi arbitrage. I mean, as a
fellow participant from the market, it's our duty also to keep them aware, share knowledge. So yeah, definitely this thing. अगर मैं आपका नंबर मिल जाएगा तो मैं आपको कांटेक्ट करके आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिर अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है? Sir, you can reach out to us at productfeedback@indiabulls.com. You can write whatever, you can fire whatever questions, whatever queries you have, and we'll be happy Okay, to there is a answer. question from someone, an_dxt. How can we analyze option chain through PCR? यार देखो, दो चीज है। आज जो ऑप्शन एक्सपायरी के लिए आ रही है कल, सी इट्स बेसिक, आई मीन इट मे बी अनपॉपुलर, बट लेट मी पुट दिस वे, ये इट वाज अवेलेबल। सो हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट, कॉल बाय पुट, राइट? सिंपल है ना, रेशियो निकाल लिया। बट मैं क्या बोलता हूँ कि यार देखो, कल जो ऑप्शन एक्सपायर होगी ना, वो 3 महीना पहले पीपल वे आर हैविंग इट टू ट्रेड, आई मीन अवेलेबल। हम कल भी जाके मार्च की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो अगर कल हमने एक ओआई बिल्ड किया और वो मान लो क्लोज नहीं किया, तो मार्च में भी वो ओपन रहेगा। एंड बिटवीन नाउ एंड मार्च पूरे मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। सो हाउ डज द स्टेल डेटा हेल्प मी टू डिसाइड टुडे? So what I personally do, I have done in many videos. You can find it on the YouTube. I prefer do a ratio of today's change versus today's change, rather than outstanding open interest versus outstanding open interest on call and put. ठीक है? So if you do today's change, से अगर आपने आज total open interest एक स्टॉक का या इक्विटी का या इंडेक्स का versus आज के open interest change on the put side, आपने एक रेशियो निकाला, तो you will say, if you get to see against each put there are 4 call activity. Okay, if it's a call buying, that you have to decode, buying or selling. If it's a call buying, then you know one thing, against each put there are 4 call getting bought. Or if you decode it, there are call selling, then you know against each put there are 4 call getting sold. So that's the bearishness, right? So again, put call ratio is a good indicator, but not on the outstanding open interest. I would say use it on current days change of open interest versus current day change of open interest on the put side. ठीक है? That's a bit unconventional, unpopular, but then that help better than total outstanding. ठीक है? So more so, आपका पहला वेबिनार है. I'm glad you made it. Come next weekend, we'll talk more about this. So yeah, next weekend, it's a new week. Let's start learning new things. So Abhishek, I will bring in some Excel files in compliance with the regulator की 3 महीने से पुराना डेटा होना है. I'll bring in some Excel file to talk about this, call put ratio. So ANDXT जी, आप next week file जरूर आओ, इस पे हम लोग बात करेंगे. Sure. Understand. I'm hoping for some PCR based strategies also, sir. Please. Yeah, definitely they will be there. Maybe option selling edge coming there. देखो, इससे नीचे तो कुछ भी नहीं. There's nothing to lose from here. It is okay. I am avoiding to personally saying that for the option seller the worst is behind us, but इससे नीचे क्या ही हो सकता है ना? जीरो का तो जो नहीं कर देंगे ना. तो बस you have survived this toughest period of option selling. Let's see. I mean the green days are ahead. Nifty, Nifty 2+2 straddle के बारे में. तो अभिषेक, I think someone is asking +2 straddle. इस बारे में आप थोड़ा डिटेल बता दो थोड़ा सा. Okay. So मैंने पहले भी काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है. निफ्टी +-2 स्ट्रैडल बेसिक स्ट्रेटेजी, जिसमें आपके एट द मनी का कॉल और पुट, एट द मनी के +1 स्ट्राइक का कॉल और पुट, और एट द मनी +2 वाले स्ट्राइक का कॉल और पुट. सिमिलरली एट द मनी -1 और -2 का भी कॉल और पुट. कॉल और पुट बेसिकली स्ट्रैडल होता है, राइट? +-2 नाम कहाँ से आया? एट द मनी के +2 स्ट्राइक प्राइस और -2 स्ट्राइक प्राइस के स्ट्रैडल्स, ये सेल होते हैं और फिक्स टाइम पे स्क्वायर ऑफ भी होते हैं. बट कंसिडर दिस, जहाँ पे भी देयर इज अ वॉलेटिलिटी या फिर मार्केट मूवमेंट आता है, राइट? जैसे ही मार्केट, समझो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं. आपने एट द एटीएम +-2 स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की, मार्केट था 26,000 पे, तो 26,000 का एक स्ट्रैडल सेल हुआ, 26,100 का स्ट्रैडल सेल हुआ, 26,200 का स्ट्रैडल सेल हुआ. सिमिलरली 25,900 और 25,800 का भी स्ट्रैडल सेल हुआ. मार्केट 26,000 पे था, ये सेल हुआ. अब ड्यूरिंग द डे मार्केट 26,100 पे आ गया, तो
स्ट्रेटेजी इसमें ऑटो एडजस्ट करेगी, और उस एडजस्टमेंट में क्या होगा, जो 25,800 का स्ट्रेडल था जो एट द मनी से अभी काफी दूर है, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और 26,300 पे एक और स्ट्रेडल सेल हो जाएगा, जिससे कि मेरा जो अभी करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है या रेफरेंस प्राइस बोलेंगे, जो रेफरेंस प्राइस चल रहा है वो हमेशा एट द मनी स्ट्राइक पे बने रहे। ये स्ट्रेटेजी न्यूट्रल मार्केट्स या फिर लो वॉलेटाइल मार्केट्स में तो अमेजिंग रिजल्ट्स देती है, बट एज एंड व्हेन देयर इज अ वॉलेटिलिटी, ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में आ जाती है, इवन आफ्टर एडजस्टमेंट्स वी सी फ्यू सम लॉसेस. So that's part of the game, right? Like, देखो, Right. option selling का you have to be in the game till you get that decay. Decay तो God भी नहीं जानते कब आ जाएगा, 9:20 में आएगा, 9:25, 3:30, sorry 3:25, 3:20. So you have to be in the game till that decay comes in. Now, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में बहुत सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व है, तो सर डीके तो एज एंड व्हेन डीके आता है सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम मेल्ट हो जाता है. वहाँ पे risk is spread also, like risk is not concentrated at ATM. Like जैसे हमने कहा, everybody start trading, selling ATM straddles triangle, but then what happened in that case? Your risk is concentrated highest at the ATM, okay, because that's at the highest volatility gamma move. Here it is spread, so risk gets spread here. So if you are not having challenge with the capital size, then I mean this is a better strategy to go in like a pro than sticking to conventional legacy status triangle. Okay, correct. Yeah, so this is a bit pro, but yeah, that's my strategy. Yeah. Any more questions? I guess we are done with the questions. I believe, yeah, there is one more question from Komal. She's asking, how do you decide whether to take a bullish, bearish, or a neutral approach on expiry day? The expiry day is not about direction; it's about position sizing. You have to be expiry day. So when we talk about expiry, it's more option than future expiry. Okay. And you cannot say कि आज मैं bullish रहूँगा, bearish रहूँगा. You have to be in a game where you are flexible to change the side, you are flexible to adjust your non-direction strategies. So it's much more than trading directions. It is more than See, देखो, again, expiry move from trap to trap. So you have to learn the skill of decoding that trap. If you find the trap is in the call side, then it is bullish. So you have to learn that skill. कि किधर trap हुआ है, कौन हुआ है. But yes, so now this is regular. We are coming almost every expiry. So eventually we'll spend time, and the purpose of this to have more of the educational stuff than giving you a trade. So we will definitely discuss how do we decode those traps, how do we detect those traps. ये next, अगर हम next webinar में इसके बारे में थोड़ा discuss कर सके कि how to identify traps. हाँ. Yeah, वो बातें कर सकते हैं. बट या नेक्स्ट में अपन पीसीआर की भी बातें करेंगे, ठीक है. तो आप रिक्वेस्टिंग टू ज्वाइन एंड देन वी आई मीन आई डोंट थिंक आवर इंटेंशन इज एवर टू से यू कि जाओ कल सुबह ये ट्रेड ले लो. आवर इंटेंशन इज ऑलवेज टू मेक यू मोर एम्पावर्ड एंड देन यू टेक द बेस्ट कॉल आउट. ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम. Okay, so great. So I guess we are done with the questions here. So thank you, Rajesh. There's a question about FIIDIA. I think you can ping him and get his detail. I think it is there on your platform, so you can onboard him and show the data. Sir, YouTube live पे तो I don't think so we can share the details. But sir, please reach out to productfeedback@indiabulls.com. Yeah, I can send an email for DXT sir, and then I think somebody will help you. Yeah. Okay. Yes. So yes, we are done with the questions here. So thank you, Rajesh sir. Thank you, Abhishek, for your time and for enlightening our audience about what to do on next expiry. Audience को हम ये बता दें कि expiry के ऊपर हम ये webinar हर Monday को लेके आते हैं. तो timings का update रखने के लिए हमारे social media platforms जैसे Instagram, Twitter, Facebook and YouTube channel को follow करना ना भूलें. आप ये follow कीजिए ताकि आपको हमारे हर webinar का update time पे मिलता रहे. So thank you, Abhishek, and thank you, Rajesh sir, for once again. And I would also like to thank the audience
audience present over here for joining the session. And see you in the next webinar. Thank you, and have a great day ahead. Thank you. Thank Thank you. you. It was Bye. great. Thank you, everyone.